Thank you very much for coming here. शुरू करने से पहले कुछ दो अच्छी खबरें सुनाना चाहता था मैं आपको. पहले छोटी जो खबर है वो ये कि कॉन्गो ब्राज़ाविल में बुर्के पे ममानत लगा दी गई है. बैन कर दिया गया बुर्का. तो जिन लोगों को बुर्कों से डर नहीं लगता वो ज़रा ध्यान से जाएं नेक्स्ट टाइम कॉन्गो ब्राज़ाविल. छोटा सा मुल्क है और छोटे से मुल्कों को अकल ज़रा जल्दी आती है, क्योंकि 1.5 बिलियन नहीं होते हैं कन्विंस करने के लिए, 1 मिलियन होता है. जो बड़ी खबर है आज की कि खलीफा जो हैं हमारे बगदादी साहब, उनको पैरालिसिस हो गया है. तो आज के बाद कोई यजीदी बच्ची को वो रेप नहीं कर पाएंगे. तो ये खुशखबरी मैं आपको देना चाह रहा था. मेरा जो रुख है इस मसले पे, उसकी बुनियाद पंजाब से है. मुझे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और सीपी और भोपाल और ये जो बड़े बड़े घराने थे जिनमें आम तौर पे सवाल का जवाब शेर में दिया जाता है, क्योंकि वो बच जाता है, वो शायर फंसता है उस चक्कर में. अरे मैं कहते हैं ओ अल्लाह पाक दी कसम मैं नहीं किया, ओ मीर तकी मीर ना दा को बंदा सी, ओ हरामजादा ओ कुछ कह गया, मैं माना कुछ नहीं किया. अल्लाह पाक दी कसम मैं नहीं कुछ किया. और आपका पर्सपेक्टिव है हिंदुस्तान के नॉर्दर्न प्लेन्स का, जिसका सबसे बड़ा क्राइम जो आपने किया वो पार्टीशन की, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था. हम मुसलमान थे लाहौर के, कसूर के, गुजरांवाला के. हमारे बड़े बड़े लोग जो थे उनके छोटे छोटे नाम थे, बुल्ले शाह, बाबा फरीद. हमारे यहाँ बहुत अजीम किस्म के शायर नहीं पैदा हुए थे जिन पे यूपी वाले कुछ कहते. आरिफ साहब उन्होंने कसम खाई थी कि ये कौम जो है जिसका नाम पठान है, पंजाबी है, बलोच है, सिंधी है, उस पे लानत है, क्योंकि उसका हमारे से क्या ताल्लुक. ये तो वो कंजर लोग हैं जिनको हम जाके सिविलाइज करेंगे. ये जीएम सैयद, ये अल्लाह बख्श सुमरो, इनको किसने मुसलमान बना दिया? मुसलमान बोलने के लिए तो जरूरी है कि लखनऊ की औकात हो. इनको क्या पता है इस्लाम क्या होता है? यहां तो से तो इस्लाम ही आया ना. ये पठान को क्या पता है इस्लाम का? वहीं से आया ना इस्लाम. इस्लाम का बाद में साहब जो हमने बनाया हशर, जो तवाइफों ने बनाया, जो उर्दू जबान ने बनाया, और साहब क्या लज्जत है, क्या लज्जत है कम्युनल फसाद की. वाह 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 वाह. एक एक हिंदू 10-10 हिंदू एक एक मुसलमान मारता है, ऐसी बात नहीं है. और वो पूछता है कि साहब कि क्यों हशर किया? बोले शेर सुना दिया, बच गए. अरे साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हर बात आपने सही की, लेकिन एक रिकग्निशन, ट्रूथ ऑफ रिकंसिलिएशन कमीशन जब बनता है उसमें सच को आना पड़ता है पहले. किसने कहा था कि तुम अपनी फौज भेजो इस सरजमीन पे? किसने दावत दी थी महमूद गजनवी को? लानत है उस पे जिसका हीरो मोहम्मद बिन कासिम है. अगर तू मुसलमान है हिंदुस्तान का और दिल्ली में किताब बेचता है नसीम हिजाजी की, जिसमें उर्दू में लिखा है जो हिंदुस्तानियों ने अपनी जबान खो दी और हमें भेज दी वहां एक्सपोर्ट करके 10 मिलियन महाजरों के साथ, बोले भाई तू उर्दूस्तान बना उधर पठानों के लिए, हम यहां दिल्ली में बेचेंगे नसीम हिजाजी की किताब जिसमें हिंदुओं को गाली होती है. और जब वो देखता है बेचने वाला, सर पाकिस्तान से आप? हाँ माशाल्लाह, ये रखिए. उससे पूछे नसीम हिजाजी, मोहम्मद बिन कासिम, द रेपिस्ट, आप रेपिस्ट की बात कर रहे हैं आज?
साला मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का रेपिस्ट, जिसको मोहम्मद की फैमिली को मारने के लिए भेजा, वो हिंदुस्तान में दिल्ली यूपी के मुसलमानों को हीरो। अकल पे पर्दे पड़ गए। व्हाट हैव वी बिकम? हमने जब तक हर हिंदू से माफी नहीं मांगी कि जिसको हम अपनी उम्मा कहते हैं, उसने ना सिर्फ सन 1000 में हिंदुओं को किया ज़िबा, बल्कि आज कश्मीर में उन्हीं हिंदू पंडितों ने जिनकी हेरिटेज है कश्मीर, उसको कश्मीर से निकाल दिया। और खामोश रहे हिंदुस्तान के मुसलमान, खामोश रहे। आज तक उनमें दम नहीं है कि वो उठ के खड़े हों कि जिसने कहा कि मैं इंडियन नहीं हूं, सीधा लेके गए वागा, जा उधर जा, तुझे बड़ा प्यारा है पाकिस्तान, जा। तुझसे पहले भी गए थे लियाकत अली खान, चूड़ीदार पजामा पहन के, अचकन लेके हरियाणा से। हम पे नाजिल कर दिया लियाकत अली खान और कह दिया सोहरवर्दी को, तू प्राइम मिनिस्टर है बंगाल का, लेकिन बंगाल नहीं जा सकता क्योंकि तुझे उर्दू नहीं आती। ढाका की हुकूमत में हर सिविल सर्वेंट वॉज डिबार्ड इफ ही कुड नॉट स्पीक उर्दू। कराची कैपिटल बनाया उन्हीं लोगों ने जिन्होंने कहा कि उर्दुस्तान बनेगा पाकिस्तान, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। उस कल्चर को सिंधी ने कहा, यार ये कौन लोग आ रहे हैं भाई, अरे भाई सुना इन्होंने मुल्क बना दिया पाकिस्तान। सिंधी वहां बैठा हुआ है, किसका है भाई, कहां से हैं? एक उसमें से जनरल मुशर्रफ दिल्ली से चला, उसके बाप के थैले में 1 लाख रुपया है, उसने जाके दिया, उन्होंने कहा चल भाई तू तो एम्बेसडर लग जा टर्की। This is how the Muslims of UP, Bihar, Madhya Pradesh, CP, Bhopal, and all those tiny sheikdoms, Nawab of Dhaka, मुर्शिदाबाद के उर्दू बोलने वाले जो बंगालियों पे थूकते थे, उसी की वजह से 30 लाख बंगाली को मारा पाकिस्तान के मुसलमान ने। और हिंदुस्तान के मुसलमान ने किसको सपोर्ट किया 71 की जंग में? बंगाली काले छोटे मुसलमान को, या मेरे नौजवान पंजाबी गोरे पठान और पंजाबी को? आप सबको पता है, कुछ आप में से 71 में पैदा भी नहीं होंगे, लेकिन पढ़िए कि हिंदुस्तानियों के घर में बंगाल और पंजाब की लड़ाई में आपने किसका साथ दिया? उर्दू का, बंगला का नहीं। क्या बंगाली की जबान मुसलमान नहीं है? क्या ढाका, बारिसाल, सिलेट और मैमन सिंह और इस जैसी छोटे छोटी बस्तियों के गरीब जो दरिया में घूमते हैं, खद्दी सी मच्छी खाते हैं, उनको क्या पता बिरयानी क्या है जनाब? बिरयानी तो हम खाते हैं। और पूरे पंजाब को कह दिया खबरदार तुमने कभी पंजाबी बोली। जो जुल्म उर्दू ने किया है मुसलमानों पे, सर वो भी सुनिए। 100 million Punjabis of Pakistan cannot read, cannot write Punjabi. In the Punjab Assembly, a Muslim Punjabi is not allowed to speak in Punjabi. Not a single school teaches Punjabi. Not a single school has the medium of instruction of Punjabi. And those SOBs today host the Babbar Khalsa. Because East Punjab is having a problem in Punjabi identity. Look at these contradictions that are taking place. If this is not a tragic illusion, why isn't anyone saying a simple truth in all of India and all the secular, liberal, left-wing, Sharia Bolshevik Muslims of India? चाहे सलीम साहब का CPM करें, आप अंदाजा लगाइए। I'm sorry, I don't have notes. I'm just speaking from my heart because I might not get a chance to talk to people like you. I wrote to the CPM. I'm a Marxist by heart. Yesterday I walked. I had to look for a May Day parade. I had to search and ask Indians, which is heritage of India, is partly rooted in communist parties, struggles.
from the 1920s. None of my Indian friends knew where is the May Day parade. अरे लानत है ऐसे हिंदुस्तान में जहां सीपीएम के फोन करो तो बोले मे डे परेड। नहीं सर, वो तो झंडा सुबह लटक गया। सुबह होता है, गर्मी है ना, में गर्मी बड़ी है साहब, बड़ी गर्मी है, तो वो झंडा लटका दिया, वो सीताराम साहब चले गए। आप पता नहीं क्यों साहब, क्या करना है आपने? अरे भैया, जिंदगी में पहली दफा हिंदुस्तान की सरजमीन जहां नमूदरी पद और डांगे पैदा हुए, मैं उस हज पे जाना चाहता हूं जहां मेरे साथ 2 लाल झंडे नजर आए, क्योंकि तुम लोगों की मैयत तैयार हो गई है, लेफ्ट का जनाजा जा रहा है, जरा धूम से निकले, हम भी तो कांधा दें। एक नौजवान यहीं होगा, हिमांशु कहां पता नहीं, उसने ढूंढ के निकाला, फोन किया, उसने कहा साहब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? उन्होंने कहा साहब एक ट्रेड यूनियन है C2, उसका भी लाल झंडा, मैंने उनमें हैमर सिकल है नहीं है, ये चांद तारा नहीं है तो नहीं चलेगा। उन्हें देखते चल गए। अरे साहब वहां तरह तरह का कॉमरेड जमा होने लगा, लोगों से गले मिला, मैं लोगों को बताया पाकिस्तानी हूं, वैसे डर गए, बोले आपके यहाँ कम्युनिस्ट भी होते हैं? बोला भैया हमने ही हसन नासिर को मारा था, आया था हैदराबाद दक्कन से, हमारी ही पंजाबी ISI ने और उर्दू के महाफिजों ने उसको टॉर्चर करके 1962 में मारा, और जब उसकी माँ दक्कन से आई तो उसने कहा कि ये तो मेरा बेटा ही नहीं है। बोले सांप काट गया था, हिंदू सांप था ना, यूं आया नागन की तरह काट के चला गया, हरामजादा, मुसलमान मार दिया उसने। हसन नासिर डाइड। आपको पता है सज्जाद जहीर भाग गए पाकिस्तान से, कौन कौन नहीं आया। हम जाहिलों को सिविलाइज करने आपके हिंदुस्तानी बेल्ट से। आपको मैं क्या बताऊं कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले कहते थे कि अगर आपको उर्दू नहीं आती तो आप कैसे कॉमरेड है भाई। और वही सारे कॉमरेड फिर उन्होंने जब मर गए तो उन्होंने कहा यार जरा मौलवी से, फैज अहमद फैज, बड़ा बड़ा आपका कॉमरेड मौलवी के हाथ से धुलता है, किसी में ऐसा दम नहीं है कि मुझे जला दो यार, मैं तो हिंदुस्तान का हूं, यहां तो 10,000 साल से कब्रिस्तान तो नई चीज है, ताजमहल तो होता ही नहीं है। अगर यानी ये तो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन कब्रिस्तानों की है ना इंडिया में बहुत बड़ी, माने ना, स्कूल तो नहीं है कब्रिस्तान। तो लोगों ने मरने के बाद अपने आप को इस्लाम में वापस लौटे। वो लोग जो मोहम्मद और खुदा में बिलीव नहीं करते, उन्होंने मौलवियों से अपनी लाशें धुलवाई। हमने 5-6 कॉमरेडों से कहा लिख दो अपनी एक विल कि मरने के बाद मुझे मौलवी नहीं छुएगा, और मस्जिद उसको दूर से सलाम। एक तैयार नहीं। जब इतना आपका मुस्लिम नेशनलिज्म तेज हो कि मेरे जैसा काफिर भी मुसलमान हो, तो आपको पता है प्रॉब्लम कितना बड़ा आगे। और फिर ये कहना कि जो आपका ये जहन से बात नहीं कर, वो क्या है सर, वो जो हिंदुस्तान पे हमला करना होता है मुसलमानों को, गज़वा हिंद। जनाब जिस मजहब का फाउंडेशन डॉक्यूमेंट ये है कि जब तक हिंदुस्तान पे फतह हासिल नहीं होगी, और हदीस है कि तुम में से सबसे अफजल वो हैं जो हिंद पे कब्जा करेंगे। सही कह रहा हूं सर? अगर आप उसको जब तक, अच्छा ये और मसला है, ये 3 और 2 फीट और 4 फीट का मसले पे ना है। द इशू इज नॉट, ये ही मेरा एतराज है। इस मजहब में या हिंदुइज्म में या जूडाइज्म में या क्रिश्चियनिटी में रेफॉर्मेशन नहीं हो सकती। द आंसर इज सेक्युलरिज्म, द आंसर इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। जिन मजहबों में सांप बात करते हैं और घोड़े उड़ते हैं, उसका रैशनलिज्म और रीजन से क्या ताल्लुक? ईमेल देने वाला कह रहा साहब ईमेल जाता है तो घोड़ा भी जाता होगा। आप तो अजीब बात कर रहे हैं। कैसे कैसे जनाब, खुदा की वो देखिए ईमेल बना दिया और मिरेकल हो गया साहब। 14 घंटे के बाद लड़का ने, अबे मिरेकल नहीं हुआ, ऊपर वाले ने उसको दफनाया, इंडिया के एड वर्कर्स ने निकाला। मिरेकल कहां से हो गया?
जो साला खोद रहा है, निकाल रहा है, बच्चों को बाहर निकाल रहा है, खाना, उसको तो कह रहे हैं तो साला तनख्वाह लेता है इसलिए करते हैं। जिसने मरवा दिया 20,000, उन्होंने कहा बिल्कुल, अबे जिसकी जिम्मेदारी उस पर जिम्मेदारी डालो। है मुसलमान ना तो कुरान कहता है ना कि सच बोलो इवन इफ द ट्रूथ इज अगेंस्ट यू, अगेंस्ट यू। है कोई मुसलमान कहने वाला कि ओए क्या कर रहा है यहां? कभी क्यों नहीं आता स्विट्जरलैंड में जलजला? हम ही गरीबों में रह गए। साला फ्लड आए, जलजला आए, मार डूबा, हाजियों की किश्ती डूबती है, हाजियों की किश्ती डूब जाती है। वो कहते पंजाबी में मक्कियों कदी चंगी खबर नहीं आंदी। कभी आपने सुना है कि जनाब वो टूरिस्ट शिप, एक वैसे साउथ कोरिया ने डुबोया, ये काम आप मानेंगे, लेकिन वो भी नीम अमीर मुल्क है, इसलिए साउथ कोरिया में डूब गया। मुसलमान सच बोलने से कासिर हो गया। और सबसे बड़ा सच ये है कि हिंदुस्तान पे जो जुल्म किया मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अब्दाली, तैमूर, जिनके नाम पे बड़े बड़े कम्युनिस्ट अपने बच्चों के नाम रखते हैं, तारिक अली आपको पता होगा, उनके माँ बाप दोनों सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे। उनके घर लड़का पैदा हुआ, उन्होंने कहा क्यों नहीं, ये तो स्पेन पे करेगा कब्जा। अच्छा, हमारे माँ बाप ने भी ये सोचा, लेकिन हमारे माँ बाप कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं थे, वो पंजाबी बिजनेस में थे, बॉम्बे में रहते थे, बॉलीवुड से उनका ताल्लुक था। उन्होंने रख दिया मेरे नाम तारिक, और भाई का नाम क्या रखा सोचिए आप, महमूद। उन्होंने कहा ए जाएगा स्पेन दी, ऐसी तैसी करेगा, दूजा आएगा हिंदुस्तान दी। दिस इज हाउ वी गॉट बगल्ड अप। हमारा नाम क्यों नहीं रखा दिलीप कुमार? क्या है? क्यों मेरी बहन का नाम निर्मला नहीं है? कहां के लोग आगे कि हिंदुस्तान का नाम रखने से कासिर, और फिर झूठ बोलना कि हमें इस सरजमीन से प्यार है। प्यार है तो रखो बच्चे का नाम दिलीप या अशोक, फिर मानेंगे कितनी बात है। 24 साल का था जब शादी हुई। छोटी उम्र में करने में बड़ा आसानी वैसे होता है, टिप दे रहा हूं बच्चों को। ये आजकल फेमिनिस्ट कह रही लेट करो, इसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है फिर संभालना मुश्किल होता है। एनीवे, बच्ची का नाम रख दिया हमने, आप यकीन नहीं करेंगे कि बीवी मेरी शिया गुजराती है, मैं हूं सुन्नी पंजाबी। इट इज अ टेरेबल मिक्स। और उसको रोकने के लिए 4 साल तक जिहाद किया दोनों साइड के पेरेंट्स ने। उनकी दुआ थी, या अल्लाह इसको रामदेव की टैबलेट ला दो, लड़का पैदा हो जाए। वो साली लड़की पैदा हो गई। आप बदनसीबों ने बच्ची का नाम रख दिया, देखें कैसे भूल जाता है, कहाँ है राज, लक्ष्मी। आप यकीन करिए कि मेरी सास सिजदे में पड़ गई रोने के, बेटा हमारा तो खुद का पानी बंद हो जाएगा। ये नहीं था, मेरी माँ ने जो कहा वो क्लासिक था, पुत्र यदि शादी नहीं होगी इधर रिश्ता नहीं आएगा। She has just been born and my mother is talking कि if her name is Lakshmi, she won't get a रिश्ता। मैं कहा ये रिश्ता, ये रिश्ते वाली लड़की नहीं बनाई हमने। ए मॉडल जड़ा है आप पे लाभ लाएगी। इट वॉज सच ए chaos for we were young। वो नरगिस और मैंने तय किया एक दिन क्लोज रूम कॉन्फ्रेंस में, हमने कहा भाई इसका क्या आउटलेट है। तो मेरे वालिद साहब जरा मजेदार आदमी थे, साल में 2 नमाजें पढ़ते थे, इसीलिए ही वो सेन ईद और बकरा ईद, वो भी बकरा ईद डॉज करना चाहते थे कि यार ये उजरी की बदबू बड़ी होती है सड़कों पे, वो बकरे कट रहे हर जगह, वो नमाज क्या पढ़ेगा। एनीवे उन्होंने कहा यार कम कर, हिंदू शिंदू ना छड़, कोई और नहीं, कोई नहीं। घर में किताबें सारी थी, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स। बोला तो कुछ किसी ने पता भी नहीं चलना। हमने बच्ची का नाम रख दिया नताशा। अरे घर में वो खुशियां, कह साहब हिंदू नहीं कम्युनिस्ट का नाम रख दिया। अब बचे गए और थालियां, और बात तू बड़ा समझदार है बच्चा, तू देखो माँ पियो तक ध्यान रखिया। दे वर हैप्पी दैट द डॉटर वॉज नेम्ड आफ्टर नॉन बिलीविंग सोवियत ट्रेडिशंस of Natalie। वो भी गलत ना रखिया, Natasha is what Natalie is called, but we didn't know better. So
Imagine the hypocrisies, the lives that a Muslim has to live in the subcontinent, because we in the Indo-Pak subcontinent are the only Muslims whose identity is Muslim. Nobody else has this identity. The Arab has a doctrinal basis of racism that suggests that for a non-Arab to consider himself to be equal to an Arab is a sin. Ibn Taymiyyah, I'm quoting sir, right, okay? तो फिर तो हम बेक्लास हो गए. इसीलिए किसी अरब ने हिंदुस्तानी नाम नहीं रखा. अगले 5000 साल में कोई फलस्तीनी अशोक नहीं होगा, लेकिन हर हिंदुस्तानी मुसलमान ने उस कौम के नाम लिए जो आपको हिकारत से देखता है, जो आप पे थूकता है. कहता है यार उधर हर आदमी. ये हालत है कि मुसलमान अपर क्लास में मोहम्मद नाम के लोगों को मोहम्मद नहीं कहा जाता, ड्राइवर को कहा जाता है, चौकीदार को मोहम्मद चाय पिलाओ, हाँ मोहम्मद मेहमान आए काम करो. जो मोहम्मद होता है अपर क्लास का, उसका मोहम्मद हटा दिया जाता है, वो हो जाता है सलीम. जो मोहम्मद सलीम जावेद होता है उसको कहते हैं सलीम साहब कैसे हैं. इट इज अस्टोनिशिंग that what we have gone through and what we have become, and the lack of ability or courage of a Muslim to stand up and say, you know, WTF, what has happened? ये क्या है? कैसे हमें खुशी है कि पंडित निकाल दिए गए कश्मीर से? How could you live with yourself? If you wanted to demand equality and rights कि गुजरात में राइट ना हो, और शेर के बच्चे और इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल की औलाद हो खड़े होते ना कि नहीं हम लेके जाएंगे इनको, सेपरेट कॉलोनी बनानी है, 10 बनेंगी. जो अपार्थेड नाफिज करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं अरे साहब कश्मीरी वापस आ गए तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी, सेपरेशन. अबे तुम ही ने निकाला और तुम ही भाषण दे रहे हो हमें कि हाउ टू लिव टुगेदर. दैट इज अपॉलिंग. I have drifted so far away from what I wanted to say. But देखें, यहाँ लोगों ने कहा what is to be done. लेनिन ने भी कहा था, अच्छी किताब पढ़ लें कभी कभार. Communism may have died, but Lenin and Marx are still alive. What is to be done का simple solution है. I don't really care if my grandmother thinks the earth is flat, or that snakes can talk, वगैरह वगैरह. I worry and I'm concerned when wise people are saying that our laws should be based on divine text, whether it is the Mahabharata, whether it is the Gita, whether it is the Quran or the Puran. ये नहीं हो सकता. Law का मतलब है a piece of text that can be changed by future generations at will. If a piece of text cannot be abrogated, it is not a law. Therefore, whether it is Sharia, or whether it is the Old Testament, or whether it is a dictum, it is not a law. It is an insult to a law. Sharia, by its very nature, is one of the most fascist approaches to human society in the 21st century. And Muslims cannot say that. And I'm talking believing Muslims. I am not talking, I'm an ex-Muslim, you know. I can't put up with this nonsense. No. Those who are in the goal, it is their duty, whether they are Maulana Madni or whether there is Javed Akhtar, or whether it's MJ Akbar, or whether it's Mr. Naqvi. ये कफन तो हम उठाएंगे. और इसके अंदर जो सबसे बड़ी जिहाद लड़ने वाली औरत है वो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर. और जब तक हिंदुस्तान में बांग्लादेश वर्ड इज गोइंग टू बी अ स्लर, बांग्लादेश, उस वक्त तक हिंदुस्तान का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कम्युनिस्ट हो, बिलीवर हो, you've lost it. The greatest strength that you have on your side, you have negated it because they are short. आपकी तो फौज गई वहां 71 में,
आपका कोई जनरल ब्रिगेडियर बंगला ही नहीं बोलता था। आपकी दोस्ती हो गई किन लोगों से? पाकिस्तानी पंजाबियों से। उनको आपने फिल्में दिखाई, शराब पिलाई, ओल्ड चैप यू कर करके, एंड पंजाबी मेट पंजाबी एंड गेव 5,000 वॉर क्रिमिनल्स एज अ गिफ्ट टू जुल्फिकार अली भुट्टो। नो, वॉर क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूं। हाँ, war criminals. 5,000 officers were granted. Why? Because each of those guys, oh, chap, Manik Shah, you took my motorcycle. No, I didn't. साले जाली अंग्रेज आके बैठे और बंगाली वहां खड़ा हुआ है, उसने कहा चले यार, पता नहीं यार थे की गाल कर देने। The Pakistanis could speak to the enemy. The liberators had no connection. उनको यही नहीं समझ में आता मुक्ति वाहिनी वाले लड़ते कैसे यार। इनका तो काम है मच्छी वच्छी बेचना, कहीं हैया हो करते हुए को गाना को टैगोर वगोर करें। उनका देव शॉक के 50,000 बंगाली मुस्लिम्स विथ AK-47s fighting and dying. The Indian perspective of Bangladesh is completely flawed, absolutely racist to the core. आपका तो वो मुल्क है जहां आप जिना को रिस्पेक्ट करते हैं और गांधी को गाली देते। किसी ने मुझे पूछ लिया दूरदर्शन पे हैं या पता नहीं कहाँ, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, वो तो अडवाणी साहब भी कह, मैंने महंगा सूट पहनता है जिना, तो महंगे सूट पहनने वालों को तो आजकल तो बहुत टॉप पे जा रहे हैं। तो ये तो पुराना सिलसिला है हिंदुस्तान का। महंगा सूट पिला दिया, पाइप पिला दिया, सिगार कर दिया, दोस्त की बेटी 16 साल की, उससे कहा नेक ओपन स्कर्ट्स पहनो और घुमाने लग गया। वो लीडर हो गया मुसलमानों का। उन्होंने कहा यार उसको तो कुछ भी नहीं पता इस्लाम का। बाबा लगता तो चंगा है ना। You betrayed Abul Kalam Azad to follow a Guju who couldn't spell anything. He didn't write even a letter to the editor in his entire life. Do you know that? You degrade Gandhi, who wrote enormous literature, even his own autobiography is worth learning. You reject that and you admire Jinnah because Jaswant Singh said so. Or Advani went there, was fed 10 plates of biryani, he came back. Yaar, udhar to koi itni mehman nawazi. All you go there is to be fed. You sit with the Afghan president and talk about trucks crossing the border. Ki pyaz sasti aayegi wahan se. When that country is attacking Mumbai and Lok Sabha, what has gone wrong with India? And इसमें मुसलमानों को आना चाहिए सामने। इंडिया के मुसलमान आज कहें फलस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं हमारा, आजादी देनी है तो बलोचिस्तान को दो, वरना शट अप दिस नॉनसेंस। जिसको इजराइल की पीड़ है, जिसको इजराइल की पीड़ है कि यार कब्जा बड़ा किया हुआ है, अबे कुरान तो पढ़ लो। उसमें नहीं लिखा सर कि वी हैव गिवन यू द मोस्ट द ऑनेस्ट लैंड। ये this is not in the Old Testament or the Torah. This is chapter 5, 20 and 21. Chapter 2, 20 to 26. हाँ, Promised land to Jews. it is said, and सुनिए और तमाशबीनी हमारी देखिए, उसमें लिखा है, God told Moses, if your people leave this land, you will suffer. तो जब तक इजराइल नहीं बना, मुसलमान कहते यहूदियों को देखो यार भाग गए तुम यहां से, मर रहे हो ना, पिट रहे हो ना यूरोप में। फर्स्ट वी यूज्ड आवर बुक टू टेल देम दैट दे वर रॉन्ग, देन व्हेन दे फॉलोड द कुरान एंड केम वी सेड या ये कब्जा कैसे, आपने कैसे कब्जा किया भाई। नॉट ओनली दैट, लुक एट आवर हिपोक्रेसी दैट वी मुस्लिम्स क्लेम दैट आवर कैलिफ उमर rode a camel and occupied the Holy Land. It is not the Jews who say that the Arabs occupied. It is the Sirah and the Sharia and the history of Islam that says that the Arabs invaded Jerusalem and captured it. Am I wrong? So who is the occupier, sir? Who built the Golden Temple, which is of Greek design, over the holiest site of the Jews? And who did Hajj over there for 14 years? May I ask? For 14 years, Makkah was not the center of Islam.
because they determined Hajj as cancelled. By the way, Islam died the day the Prophet died. The day he died was June 21st, 632. Enormous Delhi heat wave in Medina. As hot as Delhi can be, multiply by 2 and you will understand that a Medina heat wave with a dying body, dead body, 18 hours in a closed room surrounded by people who didn't want anyone other than the Hashemites to become the rulers of Islam. They locked up that body. He is the only person in Islam not to have a namaz-e-janaza. These are the people who inherited Islam. Abu Sufyan, the mortal enemy of Muhammad, established the Umayyad dynasty. His sons form Islam. वो जो यजीद की बात हुई वो सही की. ये इस्लाम बना ही यजीद के लिए था. And what happened to them in 750? In Damascus, same Damascus where chopped liver is being made out of Muslims. The entire Umayyad family saw one, Abdur Rahman, who later escaped to Spain. They were collected in a room by a guy called General Abu Musa from Khurasan. That name should ring a bell because ISIS claims it to be. They collected in a room at a reconciliation and truth conference, thousands of them. Their limbs were, the doors were shut, their bodies were cut, their arms were cut, their legs were cut. And while they bled to death, the Abbasides put silver trays with biryani over it, and musicians played, while 1,000 people amputated died. That is how the Abbasid, which are said to be the golden period of Islam, were born. A people who killed the Prophet's family and chased them to India, where a Hindu king, Raja Daher, gave them refuge, is today calling for Ghazwa Hind? You SOBs? यहाँ तो एक तो यूपी से मुझे बड़ा एतराज है कि गाली देने का रिवाज नहीं है. आप पंजाब में आए, खुदा की कसम, 5 मिनट मैं सफा कर देना सी. 5 मिनट दी गल, कितना ना गुस्सा चाहिए या. इट्स सो सिंपल. अच्छी लगती है वैसे उर्दू, हैं? It is a great language, but it is an Indian language. And its worst oppression is it has been thrust as a colonial, imperial tool to commit genocide in Bangladesh, in Sindh, in Balochistan, in Punjab. And when Ghaffar Khan said, what was it? You let us for the wolves? You've thrown us to the wolves? And Gandhiji took a train to Calcutta. Can you think when abandoned Ghaffar Khan took a train to a land where he would be imprisoned the moment he entered it? A devout Muslim that prayed 5 times a day, made the entire rifle-carrying Pathans into shovel-carrying Khudai khidmatgars, people who will serve God in the name of Islam by never touching a wild animal, was imprisoned. And you made in India ही है ना. Make in India की पहली चीज तो पाकिस्तान है ना. आपने बनाया, हमने तो मांगा ही नहीं था आपसे कुछ भी. हमने कहा था हम आपकी मुस्लिम लीग को इलेक्ट भी नहीं करते. In the 46 election we defeated these Nawabs of UP. You sent them back to us. You cut our limbs. You did not divide Maharashtra. You did not divide Tamil Nadu. You didn't divide Kerala. You didn't divide UP. You cut Punjab. And you expect me to have any sympathy with all the civilization that came with it? I don't have my arms. I'm an Indian without arms
Two places, Bengal and Punjab, where people knew how to live with each other, where the English tried their utmost to make us fight. And the Muslims of central India gave us 1 million dead in 47, 3 million dead in 71, and counting every day. I'll close with just one thing. If you cannot get rid of the entity of the Islamic State of Pakistan, you will bleed and continue to bleed. And its victims will be the Muslims of India, who may say they voted by not going to Pakistan. But let it be assured that it was the Muslims of UP, Bihar, and the South who voted 90% for the Muslim League. You voted for that curse. You made us live over there as Jinnah's orphans, and you settled back and remained with the Muslim personal law. That's a terrible injustice. Do not ever, ever, ever say. सर एक बात सर और सर आपने कहा मुसलमानों ने वोट करा हम लोगों ने वोट नहीं करा नहीं। अशराफी ने वोट करा बैकवर्ड से वोट Excellent. Muslim League got 90% of the Muslim vote. He is saying Elite what Muslim actually voting. he is saying, when he says we, he means the backward, those who are labeled as backward Muslims, because at that time They didn't have franchise. I can assure you that if they had, one second, they can. दूसरी चीज, Pakistan didn't come about as a result of any Western conspiracy. Pakistan came about because Tagore won the Nobel Prize and Iqbal got pissed off. He's the only poet in human history to have plagiarized his own poetry. And from 1902's Tarana, he made 1912's Milli Tarana. And he wrote a letter to the king of Persia that, do you know this man you've invited for the Nobel Laureate Prize who's written about Hafiz? He's a black Hindu from Bengal. And I, the white convert from Hinduism, from the great Kashmiri people, who's an authority on Persian, I have not been invited. So Tagore is the reason you have Pakistan. Thank you very much. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच. एक बहुत ही लाइवली डिस्कोर्स तारक साहब का. Why did the Unionists lose the election? Had they not lost the election of the assembly in Punjab in 1947, perhaps the partition would not have come about. No, they lost. The Muslim League won in 1947. The Unionists won the election. The Unionists won the election. Khizr Hayat, the uncle of Tariq Ali and the brother-in-law of the Communist Party, they Won in 42, lost in 47. no. There was no election in 42. There was election in 39 and then 46. And 46, the Unionists won. The Muslim League lost. Yeah. 47, sir, the Muslim League won. To that time in Lahore, it was the Unionist ministry. They quit and subsequently No, the they- Muslim League came. They had resigned. That was a different matter. जितने लोग यहाँ पे हैं सब लोग बधाई के पात्र हैं. एक चीज़ मिस कर रहे हैं हम लोग. 3 लोग यहाँ जो बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान का हौसला, और ये तीनों को आप देख लें तो वो बराबर है. गिल साहब, नकवी साहब और तारिक साहब. मेरी ये छोटी सी उम्र है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तीनों का हौसला ये जो है, एक फ़ोटो अगर इनकी खींची जाए तो पूरे हिंदुस्तान के हौसले के बराबर है.
how come when the in 1932 when the leadership, the Congress leadership was with Mr. Maulana Azad, and he rightly represented the actual what should be the the line of activity for at least Indian Muslims, how come those things were not being implemented and we resulted this? You have to understand something very basic and elementary about the Muslim psyche. We consider life on earth as a transit lounge. We yearn basically to go to the real life, which is after death. This is a belief system that can be easily turned into a death cult. In India, the rationalists like Maulana Azad and other great Muslim leaders of the time were undermined by the Communist Party of India, giving a left perspective and support of the Muslim League. So suddenly you got the legitimacy of the left, which, by the way, all social changes in human history in the last 200 years have come from the left. They haven't come from the right. All of them suddenly ended up giving legitimacy to the Muslim League, and this notion that still remains, that we seek death. As a child, we are told the greatest thing that can happen to you is to go to Hajj and die there. Sahi sir? तो शहादत की हमें लगन है. You want to live, we want to die. In a battle, who's going to win? Unless you understand that, and you fight the ideological war, which Maulana Azad failed. Because Maulana Azad could not speak to multiple levels of Muslims. Whereas Jinnah could, because he spoke in English. And if you speak in English with a British accent, you can't be wrong. आप बलूचिस्तान को अलग सेपरेट करने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं. मेरा ये कहना है, जो आपका इतना एक विराट पर्सपेक्टिव है, इतना ज़्यादा आपका पूरा रिसर्च और नॉलेज है, और आपका बिग हार्ट है, यू आर वेरी लॉजिकल, आई नो यू. तो व्हाई आर यू नॉट वर्किंग फॉर अगेन रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? It will not happen, and neither should it be asked for. An Indian concept of multiple states, independent states like the European Union, is a possibility in 100 or 200 years. It's not going to happen. Neither India should desire that. What you need is a Bhutanization of Pakistan, where there are 4 independent states who recognize the Indian ancestry and heritage, do not deny it. But when you mention Balochistan, there's a very specific issue over here. India did not invade Nepal or Burma to occupy it after 47. Balochistan, or the state of Kalat, was an independent country before India and Pakistan became independent. Kalat has been for 500 years spanning an area with Texas and France put together, even from Bahrain right up to the edge of Karachi, which was declared as an independent state. This is very interesting if you want to understand what a rascal Jinnah was. Jinnah took the case as a lawyer of the Khan of Kalat at the Cripps Commission and was paid in his weight in gold for representing the Khan of Kalat over there. Got independence because Kalat was not a princely state. Kalat had direct links, treaties with Whitehall in London, similar to what Burma or Ceylon had over there, or even Nepal or Bhutan had the same. Once Balochistan became independent, 9 months later, the same Muhammad Ali Jinnah orders the Pakistan military to invade Kalat. And when asked by the Khan of Kalat that it was you who were instrumental in our freedom, he said, I was your lawyer. Now I'm the Governor General of the King. And therefore, under His Majesty's Royal Pakistan Army has invaded Kalat, and you will have to subject to it. The tragedy is that Indians can't even, well, they don't even know where Sindh is. Forget about Balochistan. Even in your national anthem you have Sindh, but most people have no clue. They think it is like the Saraswati River. It must be some fable from 5,000 years ago. Kalat state wanted to join the Indian Union.
What did Mr. Nehru say? Oh, that will be too far. What did Mr. Bizinjo say in reply? He said, but East Pakistan is also too far. It didn't recognize that India was going to recognize a country 1,000 miles apart, but was unwilling to take the state of Kalat as West India because they couldn't figure out how will we connect with the state of Kalat. India also refused an offer by the Sultan of Oman to sell the port of Gwadar to India, which today is China's nuclear submarine base at the entrance of the Straits of Hormuz. So I'm being totally rational in my approach. I'm being scientific because the vote was wrong, the creation of Pakistan was wrong, the imposition of Urdu on Pakistan was a genocide of Sindhi, Gujarati, Kutchi, Balochi. Not a single language of Karachi has survived under the weight of Urdu. People are ashamed to speak Gujarati in public to their grandmothers. The humiliation of a Memoni speaking person who has to tell friends, yaar meri maa hai, main kya karun, Urdu nahi bolti na, to zara excuse me, I have to speak to her in Memoni. You want to die that day. Genocide hai hamari languages ka. I have a question. Actually, it's a question which I'd asked Arif Saab some time back. I'd got a very good answer from him, but I want your perspective now. What is it about Indian politics that a politician like Arif Muhammad Khan, nobody wants to touch? And the only Muslim politician or Muslim face you want is the most reactionary Muslim leader. What is it that political parties want to encourage a certain kind of Muslim and considers that to be the representative of the Muslim community and not somebody like Arif Muhammad Khan? I have a very simple response to that, and I've been saying this all along. Because the minute you ask for a liberal Muslim, you see, the search for a liberal Muslim leader is a contradiction in terms. Then you will search for a liberal Hindu leader. Then it will be a search for a liberal Sikh leader. Then it will be further you will subdivide, search for a liberal Brahman, and so on and so forth. You see, this is a false search. In a country like India, in a country, the minute a person who did a great deal of harm, poor man, he was a wonderful chap though, he didn't realize politics, and that was Shahabuddin. You see, he was drafted by Chandrasekhar and all these people. They drafted him in as an educated Muslim. They thought, poor fellow, began to believe that the only way to survive there, now that he has been drafted, is to play to a gallery and create a constituency. So he began to create constituencies on the satanic verses, for instance, on the issue of Shah Bano, and so on and so forth. He made mistake. He backed out. Ultimately, he realized that he had done a lot of damage, poor man, by his. Therefore, it is, if in this country there will have to be a leader, it will have to be you, I will stand behind you. And if it is me, you'll have to stand behind me. The minute you have, why this Muslim and not the other Muslim, you are dividing and subdividing. The whole quest should be killed. It's wrong. No, it was not that, why don't you search for liberal Muslim leaders? The question was that what is it, when you look at political parties, the only person who they think can represent the Muslim community. Who are they? The damn fools? But those damn fools are running this country, no? No, but that's it. So therefore they will search for they will find their own types.
they will find that. You see what Hello. happens is. I have already taken enough time, but since I was being discussed, therefore, I thought this intervention is necessary. The problem, I think, we need to change our perspective. The very thing, Muslim leader. Is there any provision for Muslim leader now? We are still thinking in colonial terms. This is what I had told you. We are still thinking it has a leader who cares, who thinks for all Indians. Why you want to categorize me, Muslim leader? This is the whole fight. This is the colonial mind. In fact, even when Mr. Tariq Fatah says that Indian Muslims should speak out, there is no agency which can represent the Muslims of India. I, as an individual, I have spoken out. I have stood against this expulsion of but I have I cannot pretend that I am speaking on behalf of Muslims. Even when I was representing, please try to understand, you are a scholar, and this is what I had told you. Now, the 1935 Act of, which was the Constitution for India, there to the Britishers, India was not a nation. India was a conglomeration of communities and caste, mainly communities. Our constitution, which we adopted in 1949 or 50, that constitution recognizes Indian citizen as the constituent unit of Indian nation. Are we talking as a nation, or are we still talking in colonial terms where you needed Muslim leader and Hindu leader and Christian leader and Sikh leader? Why? When I was representing a territorial constituency which had people who belonged to almost every religion. I was not representing Muslims. I was not representing Muslims in the central government or in parliament. I was representing my constituency, which had voters, people who belong to almost every religion in this country. Please, this is very important. The language and idiom which we use that promotes certain kind of thinking. Unfortunately, the educated class in this country, particularly the media, is still using the language which we have inherited from our colonial masters. We still view people as Muslim, Hindu. I'm an Indian citizen. When I'm elected, I'm not elected as a Muslim representative. In fact, this question I have been raising since my first entry into parliament, that when I'm in my constituency, canvassing in my election, I'm asking everybody to vote for me. We do not have separate, the two things which we specifically banned, our constitution, which had a constitutional and religious in one case religious sanction, in another case constitutional legal sanction. One was untouchability. We abolished it. And abolition of untouchability means we wanted to do away with the caste system. Caste in itself is not bad, but any notions of superiority or inferiority linked to caste was bad and is bad, and will be bad as long as this institution is alive. Second thing which was introduced by the Britishers, and that was separate electorate. Only a Muslim will represent the Muslims. Only a Hindu will represent the Hindus. Only a Sikh. Why I can't? Why the Prime Minister of India? Why he has not the responsibility to represent the Muslims as he represents others? In fact, when last election parliament, in one of the TV discussions, at the time when the results were coming, Mark Telly raised this question: where are the Muslim representatives? I said that was your legacy. Where is the need for Muslim? The Prime Minister, let me please complete it. But unfortunately, to me, if there is not even a single minister, Muslim minister in the central government, I do not find anything wrong with it. Even a Hindu minister will look after, he's supposed to look after the interest of Indians, not any particular community. But when the government appoints two Muslim ministers
and make them in charge of minority affairs. That is, you are institutionalizing, you are giving legal credence to that colonial thinking, that colonial legacy. This is, to my mind, this is any Indian and every Indian who is concerned about consolidation of national unity should have stood up and raised this question. Why Muslims, they do not have to do anything with national affairs, only minority affairs. So I think basically this question is erroneous. I just want to add over here that my observation is that progressive and enlightened Muslims take the position that Arif Saab has. I've discussed this with a number of people and have heard the same answer. What I'm saying is that that is an ideal situation that does not exist on the ground. Whatever you might want to say, the conflict of Khalistan had a distinct religious tone. You cannot say that it was an Indian issue. Nobody in Tamil Nadu or Bengal had anything to do with the Khalistan movement. The notion of what Mr. Owaisi says in Parliament or outside, or his brother says, are strictly based on the right-wing Indian Muslim, which, whether we like it or not, does represent the leadership of the Muslim community, because the progressive, left, enlightened, liberal, secular, and the rational Muslim has abdicated in his or her search for Indian nationalism, which means that the goal has been left alone for Owaisis and the PDP. If the PDP can only represent the Muslims, if the Muslim League in Kerala can represent Muslims of one of the most enlightened areas of India, how can you do that? I have seen in Kerala posters of Nawaz Sharif being elected as Prime Minister of Pakistan being celebrated by the All India Muslim League. We cannot divorce ourselves. Your aspirations and your thoughts are mine. But I am sorry that the threat we face today from Islamism cannot be faced by the non-Muslim. The non-Muslim doesn't even understand. Agreed. So, unless and until Arif Saab, you and Naqvi Saab and Javed Akhtar and all these great Indian Muslims go to Pakistan and tear them apart, have a coalition of progressive Muslims, not the Javed Anand types, not the Teesta types, where you are saying, Hum Hindustani hai, where you take the Tarana and smack it to Pakistan. Unless you work for the dismemberment of Pakistan, you will not have peace any time in your life. आप क्यों नहीं हमारी आज़ादी की बात करते बलोचिस्तान में? क्यों फ़लस्तीन हर वक्त आता है? किस वजह से फ़लस्तीन नंबर 1 पे है हिंदुस्तान के प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट मुसलमानों में, और बलोचिस्तान और मालदीव्स का जिक्र तक नहीं? नशीद जेल में पड़ा है, कौन बोलेगा उसके लिए? आप बोलते हैं, मुझे पता है, लेकिन theoretically you are right, practically I think you need to fine tune it, ताकि आप वो जैसे नेताजी का फॉरवर्ड ब्लॉक था, आप बनाएं फॉरवर्ड ब्लॉक कि हम मोहम्मदन कैलकाटा मोहम्मदन्स की तरह हमारी भी फुटबॉल टीम है, हम हमारे हर रूह के अंदर मजहब से हमारी डिवीजन है, फुटबॉल टीम तक कैलकाटा मोहम्मदन होती थी, और 700 साल तक मुसलमान ने हुकूमत की है हिंदुओं की 80% मेजॉरिटी पे। उस जख्म को ऐसे नहीं जाएगा। कुछ लोग नहीं बोलते हैं, जब प्यार से साथ बैठ के थोड़ा दारू पी लेते हैं, फिर अपना दुख रोते हैं। सही, you are absolutely right. मगर here I would like to point out, I won't agree that the liberal people whom you are describing as liberal and modern, that they have abdicated their responsibility. They have a tremendous obstacle, and the obstacle is that our political establishment, I am saying political establishment across the board, all parties. May I? Sir, let me complete. If may you I? कोर्ट गालिब के रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती है। एक दिन बेशक, बट सर मैं आई वुड लाइक टू, ये हमारा रियल ऑब्स्टेकल है। मैं ये नहीं समझता कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी,
मगर हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पैट्रनाइज करता है, जो प्रशांत सरीन जी ने कहा। तो मुझे क्लेरिक से और कम्युनलिस्ट से और फंडामेंटलिस्ट से लड़ना मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं 1989 का इलेक्शन क्लेरिक्स की कम से कम मिनिमम 400 लोगों की टीम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में थी आफ्टर शाहबानो। I can fight against them. But when the whole government of India stands behind them, when the whole government of India, the whole political, आपको मैं आज की मिसाल देता हूं। आप you read the, मिसाल के तौर पे you read the biography, autobiography, not biography, of the chairman of the Muslim Personal Law Board, Ali Mian. For Shahbano, he has given entire credit to Mrs. Najma Heptullah. She was the point person. She was the one who was arranging meetings between Prime Minister and the Muslim Personal Law Board. He has given her full credit. In fact, I was coming back from those days. She organized a protest, I won't say protest, but she organized a meeting of Muslim women in support of Personal Law Board. I was coming from my constituency, I reached Lucknow. The media people asked me, मैंने कहा आज आपके खिलाफ नजमा हेप्तुल्ला ने बहुत तकरीर की है। मैंने बिल्कुल लाइटली जोकिंग मैंने कहा एवरीवन हैज राइट टू हिज और हर व्यूज। उनका नहीं, उन्होंने ये कहा। मैं क्या भाई, मैं उनकी बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन एक बात जानता हूं कि 250 रुपए दिलवाए हैं कोर्ट ने शाहबानो को, उससे ज्यादा पैसे नजमा हेप्तुल्ला हर महीने अपने बाल कटवाने में खर्च करती हैं। कौन सी चीज शरीयत के ज्यादा खिलाफ है? मैं तो लाइटली कहा। अगले दिन जो मैं यहां पहुंचा, मैं पहुंचा दिल्ली, तो हर पेपर में क्या कहते हैं उसको, बॉक्स आइटम था वो। मैं तो शाम को आ गया और अगले दिन जो मैंने पेपर्स देखे तो मैं तो लाइटली कहा था, मुझे पता भी नहीं कि ये छपेगा। नहीं सर, खबर तो थी। हाँ, तो वो बॉक्स आइटम था। नाउ द सेम पर्सन, द पार्टी विच क्लेम्स कि उनका सारा बना जो उनकी स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है वो आई है शाहबानो के बाद। अब वो पार्टी में नजमा हेप्तुल्ला कंफर्टेबली, तो हमारा, मैं ये जवाब वो नहीं दे सकते, मैं नहीं दे सकता। ये सवाल आपको पूछना चाहिए मिस्टर अजीत डोवल से। मैं आपको कह रहा हूं, ये सवाल पूछना चाहिए आपको मिस्टर नरेंद्र मोदी से। ये सवाल का जवाब सईद नकवी साहब कैसे देंगे? इसका जवाब मैं कैसे दूंगा इसका जवाब? हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अनफॉर्चुनेटली वो जो कॉलोनियल जो बना हुआ है उससे निकलने को तैयार नहीं है, और वो वही काम करते हैं जो उनको आसानी से लगता है कि यहां वोट मैनेज हो सकते हैं। इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? इसको मेरे ख्याल में इसको किसी कंक्लूजन पे लाने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा। जो सुशांत ने बड़े खुलूस से ये बात उठाई है कि भाई लिबरल लोग आगे क्यों नहीं आते हैं, लीडर। अब लीडर बड़ा नाजुक मामला है, लेकिन लिबरल्स के लिए स्पेस कहाँ है? अंग्रेज ने जबकि ऑपरेशन बाहर किया और अपने अंदर एक हाइड पार्क कॉर्नर दे दिया बोलने के लिए, यहां कहां कौन है? आपने उर्दू में छोड़ रखा है कि वहां चले, उसके गौर से देखते रहते हो कि मुसलमान क्या सोच रहा है, वो खुफिया उसको मॉनिटर करके भेज देती। भाईजान, क्या आप सब ये बताइए कि एक लिबरल मुस्लिम की आवाज सुनने में हम आप मिलके, अगर मिलके कोई एक ऐसी चीज पैदा करें तो कि उसमें आप सबको दिलचस्पी होगी? फर्ज करिए कि ऐसे मीडिया का कोई आला हो जिसमें ये भी हो, आप भी हो और आप भी हो, आप देंगे नहीं, आप सवाल करेंगे, आप वो गुंजाइश पैदा नहीं करेंगे कि जिसमें बोल सकें। आरिफ मोहम्मद खां को नहीं आप दो, आप कहां भाईजान, आप कल कहां यहां चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाओगे, कहां बोलोगे?
Hello, I'm Khalid. स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है. Hello, I'm Khalid. I'm from Kashmir. I'm a student in Delhi. We talked about Islamism and the radical Islam, and we almost said that it's impossible for radical Islam to come to India. And it's almost impossible for Islamic State to make an impact or to have a constituency in India. But if we look at the Muslim majority state of Kashmir, there is already a onslaught of Islamism, not only from the separatists, but also there is a counter Salafist movement which may not believe or follow the Kashmiri separatist movement, and they outrightly reject it as satanic because it's based on the nationalist principles. But the movement is growing and it's creating rifts throughout the Kashmir, which is not visible because the Indian security establishment is holding it back. But if I may give an example, in the sense that several Sufi shrines were attacked in 2013. Also, in my knowledge, I have seen the property of mosques being divided between the Salafist radical sects and Sufi, Hanafi, more benign and moderate sects. The point is that the Indian state has failed to recognize it, and also there has been no reportage or no, for my knowledge about this. I come from there, I see it there, and I've been trying to talk to whoever I can. I wanted to ask you this question at India Policy Foundation, but I couldn't. How does the Indian state, or what would be your suggestion to the state and the intellectuals, how do they counter this? Because there is a strange scenario in India that the leftists, whose ideology is an anathema to the Islamism, share the dice with the most vocal and most radical Islamist that India has ever seen or produced. Let me address that. It comes back to my position that most non-Muslim Indians have no clue about Islamism. And even amongst those friends of mine who are non-Muslim Indians, they are simply unaware of what's happening in Kashmir and in Pakistan. I am astounded that tens of thousands of Hindus would be thrown out of Kashmir and the Hindus of India would just shrug their shoulders as if it didn't matter. It is inconceivable in any country where the majority population would be ethnically cleansed from a certain area. Now, if from my perspective, I'm outside. I can't even suggest that I'm an expert, but I'm a student of Kashmir history. India has messed up its international maneuvering and propaganda to such a degree that I think that Indian bureaucracy runs the Foreign Office, Babus run it, no sane person could do that. That every year you get insulted at every international meeting by a very powerful, aggressive speaking Pakistani diplomat, and your only answer is bilateral relation between two parties settled in Shimla in 1971. And you can imagine you're a representative of Congo, you listen to the Pakistani listing what's happening, and you listen to the Indian, you can't figure out what he said. And then the smug attitude of the Indian diplomat that I don't have to do anything. This morning I was hearing that it is closed case, it is closed case. What are you talking about? Can you speak in English, please? Nobody can. Yesterday's debate on Kashmir on the Goswami show, I was astonished. I could have represented India better than the multiple levels of Indian who were there making a fool of themselves, being ridiculed by the Pakistani delegates. Can't Indians put a point of view together without saying Article 1, 5.3, 6.5, page 2, turn? Are you in the era of carbon copies? When you have email, you made a mess of yourself because Indians don't understand Kashmir. The Kashmiri Pandits don't understand Kashmir because there is an element of guilt in fighting back. I would not have left. I would have fought back and died over there if I was a Hindu Pandit. You have to fight back, and how dare somebody say that this colony is being set up and we will oppose it? Huh? So, is there an outrage in the rest of India that, or in Tamil Nadu or Bengal or Mumbai,
that this happened? No. They're saying रोकड़ा बनाना है यार, ये चक्कर में कहाँ कश्मीर के फंस गए. India rising, India shining, खत्म. Our Prime Minister wears good suits, goes to New York, fabulous. Madison Avenue, तकरीर कर दी, और टोरंटो में देखो क्या मजा आ गया. You didn't know that the Pakistan embassy had funded 5,000 anti-Indian Sikhs and Muslims outside that zone. That most of the reporters were talking to the Babbar Khalsa guys. This is your government's fault in New Delhi, and the elitism that the MPs have. I met, anyway, I shouldn't, it was confidential, but I've been to Srinagar, I've been to Jammu, and illegally. I said the worst they could do is send me back, which is okay. I went by road, I would come back by road. I wanted to check that out. But when you see a village on top of a mountain, glittering with electricity, not a single light off in Kashmir, and you see that not even in Switzerland this has happened, and you find out they're not going to pay the electricity bill, right? Is that how it's happening? Yeah. Yes. So, and India doesn't know that. I, as a Pakistani, look there and say, yaar, this is at 2 in the morning. They are draining your power. They come and bomb your city. They attack Lok Sabha. And you're worried about tomato prices would be better if we have trade with Pakistan. How dare you think of talking to Pakistanis? Aman ki Asha, spit on them. How dare does these evil women come over here in stilettos and red lipsticks and charm the pants of every Indian who goes there, who goes to Goethe Institute was so lovely. That was terrible. Only a defeated people will entertain their enemy and exalt them at a high place and object to anyone asking them a question. You were there when I asked that question of a woman who didn't know where Meerut was because her grandfather came from there. She proudly said, there's a city near Delhi, it's called Meerut. Tariq, you're digressing. Can you just answer his question Yes. about radicalism? Radicalism. Okay, thank you. Thank you for correcting me. Radicalism can only be eradicated if Pakistan is dismembered. Very simple. The Islamic State of Pakistan is the first Islamic State of Pakistan. You acknowledge it, you accepted it. In 1971, you had a chance to wipe it out or demilitarize it. You didn't. In Kargil, you had an opportunity to go straight to Baltistan, but there were new films being released in Mumbai, so the army came back. You need to get some Kajuns to fight and stand up for your rights. Aman ki Asha is the main thing. You wipe out Aman ki Asha, you go to Wagah where you have all these high-flying rooster-type steps and tell the Pakistan army, aapki army hogi, hamare Boy Scouts honge. Parity nahi hogi. There is no parity amongst mass murderers and a democratic liberal country. I am not trying to be a hawk. I am suggesting to you, and I am not saying this lightly, the world's problems are centered around the Islamic Republic of Pakistan, its state military, its multi-billion-dollar industry of manufacturing terrorists and flinging them from Philippines and India to Indiana. It is, if Pakistan can buy the Assistant Secretary of State of the United States, and India can only give, what, $5 million to the Clinton Foundation? Is it possible? You should have bought the Secretary of State if Pakistan bought the Assistant Secretary of State. Lekin rokna lagta hai. You want to fight Islamism, you destroy Pakistan, dismember it, and tell Punjab as a landlocked place, start speaking Punjabi, then we'll talk to you. Number 2, you want to talk about Kashmir, you'll have to speak in Kashmiri. Can you imagine? Let me play this out. Your diplomat goes and speaks to a Pakistani in Kashmiri. And the Pakistani says, I don't understand what you just said. Well, it's your damn problem. You are talking of Kashmir since 70 years. You don't understand Kashmiri? To hell with you. Next time you want to talk to us, send a guy who speaks Kashmiri. You will find no one in Pakistan speaks Kashmiri.
That is how you win the war of propaganda. Not by saying, oh gee, we had bilateral issue in Shimla 1972, a POW exchange, this is bilateral. Bilateral? At least pronounce the damn thing bilateral. मजाक उड़ा रहे हैं दुनिया भर में. You want to go there, speak in Kashmiri. How many people can't you train to go there? Send Umar Abdullah, say teri pitai hogi. Up, go to the United Nations and be India's representative and speak in Kashmiri, not your mother's English. Not a single Indian has spoken at the United Nations in Kashmiri. Let the Pakistani say, yaar, ki keh rahe, samajh hi nahi aa rahi. Every Pakistani thinks that Kashmiri is a Punjabi dialect. Do you know that? Do you know that none of UK's Kashmiris are Kashmiri? Do you know Lord Nazir is not a Kashmiri? That nobody in Muzaffarabad speaks Kashmiri? You've got everything in your hand, but you don't want to look across the border. You got too much aptards and secularists and prostitutes. You're so busy inventing stupid words that mean nothing. How dare you insult journalists by saying prostitutes? Who are these people who devastate secularism by calling it secularism? Kaun hai ye? Oh, they are your friends, by the way. You better tell them your only answer. Na, sir ji, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ. ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਗਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ. You don't believe in secularism, go to Pakistan. Khalistan चाहिए, Pakistan जाओ. That is Pakistan. Yes, sir.